आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टर का कंप्लीट रोड मैप, जिसमें हम लोग सब कुछ जानेंगे। ऑटोमेशन टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग में क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, ये सब आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेवल 1 से मैनुअल टेस्टिंग। इसमें 10 सब ग्रुप्स हैं। इसमें टेस्ट प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, टेस्ट केस राइटिंग, टेस्ट एग्जीक्यूशन, डिफेक्ट रिपोर्टिंग, टेस्ट डाटा मैनेजमेंट, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। ये सब थ्योरी और थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। मैनुअल टेस्टिंग मेनली एक्सेल पे होता है। अब लेवल 2 में चलेंगे, ऑटोमेशन टेस्टिंग। इसमें आगे के पार्ट्स हैं जैसे सेलेनियम, वेब ड्राइवर, ये जावा में होता है, पीएम, साइप्रस, टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, एपीआई टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, टेस्ट रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन टेस्टिंग, बिग डाटा एंड कुकुम्बर, ये सब ऑटोमेशन टेस्टिंग में आते हैं। फिर क्वालिटी एश्योरेंस, आपने पिछला वीडियो देखा हो तो क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड रोड मैप है। और सॉफ्टवेयर टेस्टर में क्वालिटी एश्योरेंस और ऑटोमेशन टेस्टिंग दोनों एक ही हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स अलग हो जाते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आ जाता है, एजाइल मेथड आता है, रिस्क मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टेस्ट मैट्रिक्स एंड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल्स, रूट कॉज एनालिसिस, ये सारे क्वालिटी एश्योरेंस में आ जाते हैं। मैं इस माइंड मैप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इसे अच्छे से देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।